Okay, good afternoon, everybody. So we're going to have a chat between Vishal and me. Vishal's just flown in, yeah, but he looks bright and chirpy, as you can see. And, given that both of us have actually got Indian cuisine as part of a food format, so we thought maybe we start chatting about the food formats of India, which we managed to actually make as part of the QSR menu. And I think we will have similar challenges and opportunities which we'll start talking about. So Vishal, over to you, please. So, what is the exact question? So Vishal, मतलब जैसे आप बिरयानी कर रहे हैं, right? We are into Tibbs, Frankie rolls. We use Indian curries and gravies. आप बिरयानी में भी Indian spices use करते हैं. Right. So basically, what do you feel are the challenges to make a product like biryani? और कैसे आपने मतलब ये बिजनेस क्रिएट किया, तो what are the challenges to scale up? उसके बारे में थोड़ा बात कीजिए. See, I'll say in terms of challenges, I think a lot of times it's mindsets also. So biryani is unlike, pizza and burger. It cannot be made, fresh or good in 5 or 10 minutes, which a burger and pizza can be made. So we make biryani in handis after the order comes. So it takes 25, 30 minutes to make the biryani and another 20 minutes to deliver. So all in all, it takes 50, 60 minutes compared to what people expect now, 30 minutes, right? So I think that's one of the challenges, right? Like if we really want to give a good biryani, we believe to get it to your home will take 50, 60 minutes. So that's, and then of course the sanitization, we use earthen pots. तो उस हांडी को सैनिटाइज करना टू द लास्ट लेवल, जो उसमें जो मड यूज़ हुई है, चाहे उसका जितना सरफेस एरिया, एवरीथिंग, राइट, और द इनपुट्स और द ट्रेनिंग और द माइंडसेट्स. आई थिंक टू स्टैंडर्डाइज इंडियन फूड्स, स्पेशली समथिंग लाइक बिरयानी, and but I think we have done it to a great extent. Like I said, we have more than 100 outlets in 40 cities and a big. So, but I think a lot of times people, I think, conflate कि burger मुझे 20 मिनट में मिल रहा है तो ये भी मिल जाए. People should be able थोड़ा differentiate नहीं कर पाते which is the product and how it is handled. Like also मंजीत जी भी कह रहे थे, like how I think वो थोड़ा, I think the more educated we get and or we educate people, I think that will go a long way. Yeah, I think very interesting topic. So, close to a month back, we had some Swiggy, Zomato people come up to us and say कि भैया क्विक कॉमर्स बहुत अच्छा चल रहा है, तो भी हमें खाना देना है 10 मिनट के अंदर. तो मैंने कहा मतलब हमें बनाना है 10 मिनट या आपको डिलीवर करना है 10 मिनट में? सो दे सेड नहीं भाई, डिलीवर करना है 10 मिनट में और आपको मिलेंगे 3 मिनट. तो आई थिंक वेरी वेरी क्लियरली यू आर टॉकिंग अबाउट बिरयानी विच इज राउंड अबाउट 50-55 मिनट्स. And I think 5 मिनट्स में जो डिलीवर है, बनती 25 मिनट में हम 25 मिनट का डिलीवरी टाइम. और यहाँ पे हम कंज्यूमर देख रहे हैं जो बोल रहे हैं 10 मिनट में चीज़ें चाहिए. सो वी एक्चुअली सेड चलो लेट्स पायलट, व्हाई नॉट, वी कैन सरप्राइज आवरसेल्फ. तो हमने एक्चुअली अपने रोल्स में छोटा मेन्यू बना दिया वेयर वी न्यू दैट वी कुड एक्चुअली प्रिपेयर इट इन 3 मिनट्स. एंड वी सेड ओके हम इतना ही दे सकते हैं. सो फार वी रियलाइज 10 के अगेंस्ट 12-15 हो गया है. बट नाउ द कंज्यूमर सिंग सर आपके सारे फ्लेवर नहीं मिल रहे हैं. मैंने कहा यार सारे फ्लेवर का मतलब अगर लुफ्स उठाना है, मज़ा उठाना है तो थोड़ा टाइम दीजिएगा. So I think very similar to what you are saying कि if people really want great food, especially Indian food, fresh हमने बात की पिछले सेशन में, I'm sure they'll have to then wait and be patient about it. But I don't know, given that I think we need to maybe, I will not use the word fight that trend, but I think we have to be cognizant कि अगर आपको कोई 5 मिनट में कुछ बना के दे रहा है तो बस गर्म ही करा जा सकता है. मतलब आप बेन मेरी में कुछ रखा हुआ है उसको गर्म करके दे सकते हैं, बट आई थिंक अगर रोटी तो नहीं बनेगी, मतलब कुछ और गर्म ही कर सकते हैं उसको ना. बट आई थिंक पीपल ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आई थिंक व्हाट वी आर गेटिंग, इट्स नॉट उबर ओला कि आप बैठ के चले गए, राइट? इट इज़ फाइनली फूड विच यू आर पुटिंग इन योर बॉडी. सो विशाल, लेट मी गिव यू अ चैलेंज राइट नाउ. सोचिए अगर आपको बिरयानी 10 मिनट में अगर देनी है, सो हाउ वुड यू रीस्ट्रक्चर एंटायर ऑपरेशन? नहीं, वो करा जा सकता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस से करा जा सकता है. एंड SKU फिर कम करने पड़ेंगे कि भाई खाली आप चिकन और वेज बिरयानी दे रहे हैं, आपको पता है कि हर 10-15 मिनट में 10 ऑर्डर आएंगे, तो आप वो 10-15 मिनट पहले बना रहे हैं, तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस से होगा. बट आई एम नॉट सेइंग अगेन, आई एम सेइंग इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग अ ट्रेंड, बट आई थिंक पीपल शुड ऑल्सो बी कोग्नाइजेंट. आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ आवर जर्नी ऑल्सो. Of course, we should all go for technology or fast-paced world and things like that. But I think certain things, I think we need to also. Vishal, I'll tell you a small incident, right?
So, we come from a generation जहाँ हम दुकान चाहते थे सामान खरीदने, and हमेशा मंथ का मतलब परचेस होता था, एक टॉप अप होता था FMCG वर्ल्ड में. अब अगर मैं देखूँ यंगस्टर्स के बीच में, मतलब उनको अगर मतलब छोटा सा पेन भी चाहिए या साबुन चाहिए ना, क्विक कॉमर्स खोलेंगे, ऑर्डर करेंगे, 5 मिनट आ जाएगा. सो वेरी क्लियरली दिस जनरेशन इज नॉट करप्टेड. इफ़ यू आस्क मी देयर आर ट्रेंड्स, और कहते हैं ना पानी मतलब माउंटेन के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, नीचे ही आने वाला है पानी. सो समवेयर आई थिंक वील हैव टू बी कॉग्निजेंट कि होने ही वाला है कि मतलब पीपल विल एक्सपेक्ट, एंड आई थिंक हॉर्सेस फॉर कोर्सेज. तो मेरे हिसाब से हमें, जैसे यू सेड, लाइक आई हैव टेकन अ कॉल सिंह, अच्छा 4 में दे दूंगा 10 मिनट के अंदर, बाकी अगर चाहिए तो आप प्लीज़ 30 मिनट तो वेट कीजिएगा. दैट्स द राइट वे कि भाई टीजर दे दो, पूरी पिक्चर देखनी है तो जरा सा वेट करना पड़ेगा. वेल सेड यार, मतलब इट्स अ वेरी नाइस एंगल, राइट? टीजर वर्सेस द फुल पिक्चर. तो आई थिंक वो ये क्विक कॉमर्स मेरे हिसाब से ट्रेलर है QSR के लिए, फुल मेन्यू के लिए उनको जाके मतलब रेगुलर करना पड़ेगा. सो यू आल्सो टच्ड अपॉन प्रेडिक्टिव एनालिसिस. तो आपके हिसाब से हाउ इंपॉर्टेंट इज द रोल दैट टेक्नोलॉजी विल प्ले इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई थिंक एवरीथिंग इज अ टेक्नोलॉजी. आज जो हम नॉर्मल रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं वो भी टेक्नोलॉजी है, राइट? एक टाइम पे तो सब कुछ, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है. उसके बाद फ्रोजन है, रिटॉर्ट है, एंड नाउ प्रेडिक्टिव एनालिसिस है. एंड आई थिंक इन टुडेज टाइम ऑफ AI इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि भाई आपके पास, हमारे पास 10 साल का ट्रेंड है आउटलेट्स का, हमें पता है इन दिस आउटलेट 8 PM कितने ऑर्डर्स आते हैं. तो आई थिंक ऑल दैट कैन बी डन, एंड आई थिंक वील हैव टू देन फिगर इन कि वेस्टेज कितना है. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन एंड वी आर ओपन टू इट. बट आई एम सेइंग कि स्टिल लाइक वी आर स्टिल अ बिट ओल्ड स्कूल कि फिर भी कि यानी फूड इज फूड, यू आर पुटिंग इनसाइड योर बॉडीज, सो इट्स बेटर टू बी केयरफुल. I think, but of course, like you said, we can't fight trends. Pani upar se, I think very well said. So, but I'm saying there's some onus on us as food companies to be cognizant of that. Yeah. So Vishal, मुझे बताइए, so obviously we see a lot of fight happening between Indian QSR and multinational, right? एक जगह burger है, patties है, then you've got biryanis, you've got rolls from Tibbs, Frankie. तो आपके हिसाब से where do you see, let's say, the market in 5 years' time? What do you think will be the market share between these kind of products? So 5 years is, I think, too less to, things don't change that much, what we think in 5 years. But if I have to say 10, 15 years, see, Jollibee, there's a company in Philippines, which unki sales $5 billion ki hai, right? 5 billion is like 40-50,000 crores. It is, Domino's ki India mein sale is 5,500 crores, right? So Jollibee is a local brand. Or Yoshinoya, Japan mein, unki sales is like more than $1 billion, Japanese food. So what we have seen generally, I have been on finance side, when the multinationals food chain comes, the likes of McDonald's, Burger King, Domino's, everyone, Starbucks, for the first 10, 20 years, they generally have a bigger share of the market because they have brands, they have scale, they have capital, they have systems, process, everything. But food is a very local thing. What we have grown up eating for hundreds of years. It's in our memories. Food is comfort. Food is, memories also. So once the local companies who are creating local food, they learn the tricks of the trade. Standardization, processes, trainings, branding, and they get access to capital. Finally, they become bigger. If you see today also, Starbucks has been there in India now some time. They have more than 400 outlets. But chains like Blue Tokai or Third Wave, they're giving them the run because, see, somewhere Starbucks is used to getting the food, standard, sandwiches which are coming frozen. I'm not, again, saying it's not but I think there'll be local companies who will be able to do it better. Lucky Coffee in China, so many of them, right? So I think my vote is for always the local food because the habits cannot be changed so fast. First, and I'm not saying the likes of McDonald's or Burger Kings or anyone for that matter will always do well, but the local companies finally gain traction. No, very interesting point. I mean, we've been there since 1969. 55 साल हो गए हमारे ब्रांड को, and very clearly we've observed that even today, people will want, the gravy-based rolls. So a lot of people keep talking about कि we've got dry wraps and dry rolls, and हम हमेशा कहते हैं कि we are gravy-licious rolls, और हमारे हर रोल के अंदर ग्रेवी रहता है, and that's why many times when people eat it they stain their shirts, और हम कहते हैं भाई ये इंडियन वाला तरीका है खाने का, अगर बर्गर खाना है, कुछ खाना है, अगर ख़राब नहीं करना तो बर्गर खा लीजिएगा. So I agree completely with you. In fact, we've seen that people really love
we launched something called Proti Roti around about 6 months back. And it's a plant protein based thing. And काफ़ी लोग जब plant protein करते, they used to make it bland. तो हमने actually कहा कि our specialization is gravy and Indian spices. So we actually managed to create recipes on that same domain. And we've got the secret Frankie masala जो हमने sprinkle किया. And I can tell you people loved it. So I completely echo what you're saying. Okay, I think all the MNCs will have to find ways of customizing local Indian dishes on their menu. I'll give a simple example. If you see Coke, they bought over Thumbs Up, in 1980s or 90s from Mr. Ramesh Chauhan. That time they said, Coke, we are international, everything, and Thumbs Up is local, and you better sell it to us, otherwise, anyway, But I think broader point is today, if people take a guess in Coke, how much is Coke's revenue? Only Coke brand, not their other brands in India, and how much is Thumbs Up's revenue? Any guesses? Yeah, anyone? Can you take a guess? Because a very good example. And so, I think local. Any guess? So let me give you an example, broad idea. Coke is today around close to 4,000 crores revenue in India. Not the Coke company, because Coke company owns a lot of other smaller other portfolio. So Coke is 4,000 crore, 5,000 crore. How much would be Thumbs Up? Any guesses? I don't have the figures, but what I've read somewhere is Thumbs Up in India and Southeast Asia is giving a competition to Coca-Cola itself. The actual brand Coca-Cola, it is giving the competition to that. Even in Southeast Asia and countries like Vietnam, now you can find Thumbs Up. So Coke is launching Thumbs Up instead to all the Southeast Asian countries as such, which shows that it's a good brand which is they are strategizing. So I'll just talk numbers. So Thumbs Up in India does 8,000 crores. So Coke ने पूरी एडवर्टाइजिंग कर ली 30 साल से इंडिया में, सब कुछ कर लिया, फिर भी 4,000 करोड़ का ही बेच पाए. No, and I'll just build on this one. Thumbs Up 8,000 करोड़ का है, जबकि एक टाइम पे they tried to kill the brand. No, and I can add to that. So I'm aware that Coke actually printed, they have these visi-coolers, right, and fountain machines. And there was a time when they actually for 5 years did not put a single visi-cooler Thumbs Up branding. Yeah. Because their belief was they could kill it. But the consumer actually said, sorry, dil mange more. Right, it was actually Thumbs Up. And now apparently they've gone back. Yeah, and they're actually doing all branded stuff of Thumbs Up. And Coke's actually taken a back seat. So it's a great case study. Yeah. And also see, Lahori Zeera now, if people come from Punjab, local taste, apne zeere, uska kale namak ka. So people are, Lahori Zeera is giving a run for the money for these multinationals. Same. And if you go back, in food also, a lot of these brands, McDonald's, Burger King, Starbucks, they came out of America in 1960s, 70s, 50s, after Second World War, when US became a world power. So soft power follows the hard power. अब इंडिया की भी हार्ड पावर आ रही है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, तो एज वी गो टुवर्ड्स 8, 9, 10 ट्रिलियन, लोगों को लगेगा खाना तो हमारा अच्छा है ही, उसमें कोई शक नहीं है, पर अब लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे. आई थिंक एक बार पैसा आ जाए तो लोगों को लगता है इनकी बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं. सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक आर कबाब्स चीज़ें, एंड वी आर लर्निंग स्टैंडर्डाइजेशन, वी आर लर्निंग ऑल दैट, राइट, एंड वी हैव सच अ रिच, I've lived in US, I've lived in Singapore, पर आप UK जाओ, उनका फिश एंड चिप्स अच्छा है सब कुछ, बट सी आर फूड इज मोर लेयरिंग, मोर कर्नाटक जाओ, कन्नड़ फूड में, महाराष्ट्रियन फूड में, गुजराती फूड में, बंगाली फूड में उतना डेप्थ है. इट्स अ मैटर ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग एंड ब्रांडिंग इट एंड टेकिंग इट. So I have no doubt in my mind, I'm not saying 5 years, but 10, 20 years, Indian food will be on the top. No, in fact, very interesting. If I ask everybody, do you know which is the common innovation that is actually currently available across most of the cafes in India? Anyone, any guesses? So almost every QSR chain has launched this beverage with this flavor or this ingredient. Take a guess. No, you're close. Anyone else? So it's actually saffron. So if you go to Starbucks, saffron latte, right? If you go to Third Wave, saffron, right? Last night I was at a place, a restaurant, Mommy June Cafe. Again, I saw saffron. And you will realize that across brands, they've all realized the power of Indian ingredients, because Indian ingredients just not about flavor. They also have a lot of therapeutic properties. And I think that's the beauty that we bring compared to most of the other ingredients used in the other countries.
And I agree with the therapeutic properties. You know, biryani में हम लोग कहते हैं हमारे कबाब से तो मसाले I think जो lot of the degenerative diseases which are happening, mental this, I think a lot of our spices, you know, curcumin, haldi, hing, they are capable of, but we have to be, I think, more proud of our heritage and go with a very strong foot forward. Yeah. So, I mean, to just sum it up, what he's saying is make in India. Both of us belong there. So, keep buying us. Yeah? So, guys, I think we've ended the session. Thanks so much, guys. I hope you all enjoyed it. Thanks, Vishal.